अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। साहूकारों से पैसे छीनकर गरीबों को देने वाले एक नक्सलाइट्स के जोड़े ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के थोरूर मंडल में वाक़े चेरला पालेम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक नक्सलाइट जोड़ा जो कि CPIM के नक्सली तंजीम के मरकज़ी मेंबर्स बताए गए हैं, आज रियासती DIG श्री महेंद्र रेड्डी के रूबरू अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर DIG साहब ने बताया कि ऐसे तमाम खुद सुपुर्द नक्सलाइट्स को हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दूसरे नक्सलाइट्स से भी कौमी धारे में शामिल हो जाने की अपील की। And subsequently, when Narasimha Reddy alias Jampanna decided to surrender, she also volunteered to come out, and then both of them together have surrendered before the police. Mr. Narasimha Reddy alias Jampanna carries 25 lakhs as reward, whereas Rajita carries 5 lakhs, and this amount will be claimed from the government and given to them as a part of rehabilitation. Since Jampanna is a CC committee member, now there are 18 other CC committee members left in the organization. We from Telangana Police appeal to all the central committee members to surrender before the police and then get rehabilitated as a part of rehabilitation policy undertaken by the government. How big is this success, sir? And you think in coming days we can see more surrender, more big surrenders? The policy of surrender has been happening over a period of time, and several of the top cadres have surrendered over a period of time, and we do hope that the surrender of this Jampanna will motivate several others to come into the mainstream and lead normal life. Neighboring state also has contacted you, sir, regarding the investigation or the questioning in this case, because he was wanted in neighboring states also. Yeah, the police organizations of different states are in touch with Telangana Police, and we will take the examination forward and then take action as per the law.